अफगानिस्तान में 17 साल से जंग जारी है। 2500 से जायद फौजियों की हलाकत हो चुकी है। अमरीकी या मगरबी और लगभग 715 अरब डॉलर अमरीकी इसमें खर्च कर चुके हैं। दसियों हज़ारों आम शहरी इसका निशाना बन चुके हैं, मगर अफगानिस्तान की सूरत हाल किसी के काबू में नहीं आ रही है, जिसके बाद अमरीका अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि अफगानिस्तान में देरपा अमन का वाहिद रास्ता मज़ाक़रात है और ये अमल शुरू भी कर दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है दोहा में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमरीका तालिबान से बराह रास्त मज़ाक़रात तो कर रहा है, मगर अफगान हुकूमत की जानिब से अभी इसमें कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र नहीं आई है। मगर कल अफगान दारुल हुकूमत में एक और दहशतगर्दी का अलमनाक वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक भयानक वाक़या हुआ, जहां काबुल में एक बड़े हॉल के अंदर जहां 12 रबीउल अव्वल की ईद मिलादुन्नबी की तकरीब हो रही थी, एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें उल्मा की एक तादाद समेत 60 से जायद अफराद शहीद हो गए और 80 जख्मी हुए। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। अपनी नौयत का हालिया दिनों में ये बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला था, जिसका निशाना एक बार फिर काबुल के मासूम शहरी बने। इस हमले के बाद ये तासुर नुमाया होकर सामने आया है कि अफगान तालिबान के साथ मुफाहमत के जरिए दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। हालिया दिनों में अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल जोसेफ डैनफोर्ड ने हफ्ते के रोज़ कनाडा में एक मुज़ाकरे दौरान ये बात तस्लीम की कि अफगान मसले का हल जंग नहीं बल्कि मुफाहमती अमल में यानी कि मुज़ाकरात में पोशीदा है। Here's what I think about in terms of Afghanistan. We're not going to have a solution as a military solution. Success in Afghanistan is an Afghan-owned, Afghan-led reconciliation process. That requires us to have political pressure, social pressure, and military pressure. In the military dimension, our task is to make sure the Taliban realize that they cannot win on the battlefield. But they're not losing either. They are not losing right now. I think that's a fair statement. And we used the term stalemate a year ago, and relatively speaking, it hasn't changed much. इससे कबल अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल स्कॉट मिलर भी कह चुके हैं कि अफगान मसले का हल अस्करी नहीं बल्कि सियासी है। अफगानिस्तान को जंग से नहीं जीता जा सकता, इसका हल ढूंढना होगा। अब अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने, जो कि इस वक्त तालिबान के साथ सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से बात कर रहे हैं, अमरीकी नुमाइंदे की हैसियत से बात कर रहे हैं, इतवार को अफगानिस्तान में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और इस उम्मीद का इजहार किया कि 5 माह बाद होने वाले अफगान सदारती इलेक्शन से कबल यानी अप्रैल से कबल तालिबान और दीगर अफगान ग्रुप्स के साथ जो अमरीकी बातचीत हो रही है वो एक अमन माहिदे पर मुत्तफिक हो जाएंगे, जिसमें अफगानिस्तान की हुकूमत भी शरीक कार होगी। ये बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दिया। I hope that the Taliban and other Afghans would use the election date as a deadline to achieve a peace agreement before then. I am talking to all Afghans, all interested parties who are interested in a political settlement. ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफगान अमन माहिदे के बारे में इस उम्मीद का इजहार कतर के शहर दोहा में, जहाँ पे वो अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो ताज़ा तरीन दौर हुआ, जो 3 रोज़ा दौर था, उसके बाद किया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में देरपा अमन के क़याम पर बातचीत की गई है। इस वक्त सिर्फ अमरीका ही नहीं बल्कि चीन और रूस भी अफगान अमल में पेशरफ्त के लिए भरपूर अंदाज में सरगर्म है, जिसके तहत तालिबान के 5 रुकनी वफ़द ने पिछले हफ्ते अफगान अमल पर मास्को में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की थी, जबकि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के हुक्काम पर मुश्तमिल सह फरीकी इजलास के भी कई दौर हो चुके हैं। ये बहुत अहम मामला है। अफगानिस्तान में अमन कायम होता है, अफगानिस्तान में अमन की उम्मीदें ही कायम होती हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इससे बेहतर खबर कोई नहीं हो सकती और ये पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, जिसकी कुछ उम्मीद पैदा हुई है। क्या वाकई ये उम्मीद जो है ये हकीकी है, ये जेन्युइन है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब उमर ज़कीलवाल, जो कि अब से चंद दिन पहले तक पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर रहे थे। पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए उमर ज़कीलवाल साहब ने बेपनाह कोशिशें की और यकीनन वो काफ़ी हद तक उसमें
उन बेहतरी के आसार कम अज़ कम लाने में उनको कुछ न कुछ कामयाबी हासिल हुई। हमारे साथ काबुल से मौजूद हैं मोहतरम उमर ज़कीलवाल। थैंक यू सो मच एम्बेसडर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप कितना श्योर हैं और कितना आप क्रेडेंस दे रहे हैं, कितनी क्रेडिबिलिटी है जो ज़ल्म खलीलजाद ने कहा कि अप्रैल से पहले जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे काबुल में, उससे पहले कोई एग्रीमेंट शायद हो जाए जो कि पीस एग्रीमेंट हो, जिसमें कि सारे जो इसमें पार्टीज़ हैं, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अमेरिकन हो या अफगान गवर्नमेंट हो, वो इसका हिस्सा बने। क्या वाकई कोई सॉलिड रे ऑफ होप है जिस पे आपको भी कोई कॉन्फिडेंस हो? वेल, फर्स्ट कमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खलीलजाद साहब वो स्टेटमेंट वो इजाफतर एक डिजायर था, and definitely in addition to the desire, he will be trying to push before the presidential election that such a settlement is reached, and he is basing that optimism and desire on the willingness of the Taliban to negotiate and to reach a conclusion, and of course in the consensus that has emerged within Afghanistan, the broader consensus that has emerged within Afghanistan with respect to the peace settlement, and also a strong desire within the U.S. administration, whether that is military or diplomatic. All sides now say that the more sensible solution to the Afghan conflict is to end it through peace talks and negotiations with the Taliban. एक्सेलेंसी, कितना अफगान गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, कितना आप लोगों को इंफॉर्मेशन रहती है, आप फेमिलियर होते हैं जो राउंड्स हो रहे हैं दोहा में तालिबान और अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान, कितना आपके साथ शेयर किया जाता है? हाउ मच आर यू इन द पिक्चर? Well, it's not just a government. The peace talks with Taliban is not only a government issue. It's a broader Afghan issue. It belongs to everybody within Afghanistan. It's from here in Afghanistan, it's not only the government, the broader political leadership in Afghanistan wants to reach peace deal with Taliban. In Zalmay Khalilzad, for that purpose, is engaging not only the Afghan government, but also discussing and consulting the broader political leadership. So, as a whole, there is a greater weight for pushing for peace from the Afghan aid with the Taliban. आपको कितना इस बात की उम्मीद है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं अप्रैल में, इसके लिए कोई कंड्यूसिव माहौल बन पाएगा? इसके लिए आपके अपने लेवल पे क्या कोई एफर्ट हो रही है? कोई इस सिलसिले में आपको कोई आपका इनिशिएटिव है अफगान गवर्नमेंट का, एक्सक्लूसिवली अफगान गवर्नमेंट का, कि क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट्स होंगे जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा और फिर जो ओवरऑल अफगानिस्तान में पीस सिचुएशन है वो कंड्यूसिव नहीं है, तो आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये एक बेहतर एटमॉस्फेयर में हो पाएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? First of all, the planning for the presidential election will go ahead regardless, and they have to, because in fact peace will have to emerge and will emerge as one of the most important campaign issues amongst the competing candidates, and therefore it is through that type of campaign discussion that a greater consensus and a greater agreement and perhaps a greater clarity will emerge as to what type of peace is the Afghans seeking, and what type of accommodation the Afghans are willing to give to the Taliban in the power structure, whether that's in the process or in the power structure. And perhaps also there is also discussion that peace is even bigger than election. Election will have to support and complement and provide the environment for discussion on peace and perhaps push it. But peace is so big that if at the end, at some time,
It comes that we need to sacrifice election for it so that we take some other steps, that there is that readiness and willingness for that as well. साहब, आपकी बड़ी पर्सनल एफर्ट रही हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डिफरेंसेस आते रहते हैं, इमर्ज करते रहते हैं, कि उनको हैमर आउट करें, उनको एड्रेस करें, और फिर इसमें आपका बड़ा ही इंटेंस एक रोल रहा है हमारी मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी और हमारी सिविलियन लीडरशिप के साथ भी, और कुछ न कुछ उसमें ज़रूर बेहतरी आई है। बट आप बताइए कितना हर्ट हुई आपकी एफर्ट जब ये एसएसपी ताहिर दावड़ का इंसिडेंट हुआ, उनकी बॉडी नंगरहार में मिली, और फिर जब उसको हैंडिंग ओवर का मसला शुरू हुआ, वो ऐसा लगता है कि उसने जो आपकी एफर्ट थी उसको काफ़ी डैमेज किया, क्योंकि वो हैंडल इस लिहाज से हो नहीं सका जो कि पाकिस्तान की ऑफिशियल एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि ऑफिशियल लेवल पे वो बॉडी जो है वो ऐसा लग रहा था कि वो उसका ट्रांसफ़र जो है वो मैनेज नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको ट्राइबल लेवल पे किया जा रहा है, जिससे कि डिफरेंसेस बने। कितना हर्ट किया है ये ताहिर दावड़ के कि जो बॉडी का मामला हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, उसने पाक अफगान जो एक आपने एक वर्किंग रिलेशनशिप किसी हद तक बनाई थी उसको? It's handling disappointing stuff, no doubt about it. But I always say that relations with respect to Pakistan-Afghanistan relations, it's not the management of the expected that is the biggest challenge. It is actually of the unexpected, something that happens and then is mishandled and mismanaged. And within the unexpected is the emotional side that is the most difficult to manage, not the real in substance. Unfortunately, the Tahir Dawar side was mismanaged, and it was mismanaged by both sides. And it was mismanaged because there was misunderstanding with respect to the intentions. I did push on the Tahir Dawar side to be handled with extreme sensitivity and respect, and that is precisely what the attempt on the Afghan side was, but it was misunderstood in Pakistan. Tribals at the end, tribal elders are viewed with respect. Tribal elders on the Afghan side, they got involved purely out of respect, not out of opposition to handing over the body to the Pakistani state. But there was a tribal, a person from tribe, but an important government official as well, who'd been brutally killed, and he was found by people of a tribe from this side. So they've treated, I mean, they have this tribal Pashtun arrangements on both sides for centuries. So the tribe on this side had the desire to take the body with respect and dignity, and that's precisely what they did, and hand it over to the tribe on their side. But it was misunderstood because there were individuals involved in the social media did not play a good role in that. In the statements, in the many statements they came, they were misinterpreted, and that it was mishandled. Ardaina should not believe in, therefore, I should encourage and shouldn't believe that this is going to damage the environment on which we have worked so hard. If we compare to where we were 2 years ago and today we have formal frameworks through which we engage with each other institutionally. In overall relations, or overall, let's say, ground has much improved on which we can build. It would be unfortunate if these unexpected cases, as tragic as they are, be allowed to derail us from the improvements and from the progress that has been made. I personally remain optimistic that both Afghanistan and Pakistan governments, and of course the relevant institutions in the leadership would, of course, sense the importance of the bilateral relations and would not allow these incidents to have a permanent or a severe damage to the path that we've chosen in the path that we are now, of course, developed upon. बस साहब ये बताइए कि जो थ्रेट है इस वक्त एक जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी को पीस को थ्रेट है वो एक दाइश एलिमेंट है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है
दाइश के हवाले से ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाहे वो अफगान हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान की हुकूमत हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे और दूसरे जो इस इलाके के इंटरलॉकेटर्स हो, इवन तालिबान जो हैं वो उनको एनिमी समझते हैं। और फिर कल जो इंसिडेंट हुआ है काबुल में, जहाँ ईद मिलादुन्नबी के इवेंट में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ, और हम पाकिस्तानी समझ सकते हैं कि कितना दर्द है और कितनी इसमें तकलीफ़ है जब एक आम मासूम लोगों की इस तरह से हलाकत हो। क्या किया जा रहा है? ये दाइश का कितना सीरियस थ्रेट है, और ये इसमें तो किसी को आपको शिकायत नहीं है कि कोई उनको कोई सपोर्ट कर रहा है या कुछ इस तरह की बात है, तो ये क्यों नहीं रूट आउट हो पा रहा, या ये कि इसका थ्रेट जो है वो कितना सीरियस है? ये थ्रेट सबके लिए बहुत सीरियस है। पाकिस्तान के लिए सीरियस है, हम के लिए सीरियस है, सारे रीजन और दुनिया के लिए सीरियस है। And it's a very common threat, and it is these type of commonalities, both threat-wise and also opportunity-wise, that should bring Pakistani Afghan institutions closer together to cooperate. If there is a greater cooperation, I do not believe that Daesh will have any foothold either in Afghanistan and Pakistan. Daesh is not very strong in Afghanistan, but these individual incidents, terrorists in particular, targeting soft areas, are extremely difficult to be prevented. Like, who would have imagined that in a function in which there is the celebration of Eid Milad-un-Nabi and the recitation of Quran and the competition of Quran, a terrorist in the name of Islam will come and explore himself in the midst of such function. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब। एम्बेसडर उमर ज़खिलवाल अभी चंद दिन पहले तक अफगानिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर थे।